हेलो एवरीवन। सो टुडे इज द डे 5 ऑफ नवरात्रि एंड आज का दिन है गॉडेस स्कंद माता का। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, गॉडेस स्कंद माता जानी जाती है उनके पावर पावर ऑफ मदरहुड एंड नर्चरिंग के लिए। जब हम ये शो के थीम्स डिसाइड कर रहे थे एंड जब डे 5 का टाइम आया तो एंड वी वर स्टार्टिंग टू थिंक अबाउट द गेस्ट हु इज रिलेटेड टू द मदरहुड एंड नर्चरिंग स्पेसिफिकली। तो रिद्धि, इनका ही नाम मेरे दिमाग में आया सबसे पहले एंड हमने उनको रीच आउट किया। सो आज के जो स्पेशल गेस्ट है हमारे, फर्स्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस देम। रिद्धि जो है, रिद्धि एक एंटरप्रेन्योर है एंड शी इज अ फाउंडर ऑफ इजी पेरेंटिंग हब आल्सो, एंड शी हेल्प मदर्स टू फील लाइक अ सुपर मॉम। ये उनकी स्पेशलिटी है, ये उनकी क्वालिटी है। फ्रॉम लास्ट 7 years रिद्धि's contribution to this field as a parenting coach has been immense, एंड उन्होंने टॉप कॉर्पोरेट्स के लिए पेरेंटिंग वर्कशॉप कंडक्ट किए हैं प्रीवियसली। सो रिद्धि एक रिकॉग्नाइज इंडियाज लीडिंग पेरेंटिंग कोच है और ये रिकॉग्नाइजेशन उनको टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से मिला गया है। सो वेलकम रिद्धि फॉर दिस पर्टिकुलर एपिसोड एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस शो। Yes, thank you so much, Priyanka, and I absolutely love your idea of calling 9 women for 9 days of Navratri. Very unique. यस। Yes, thank सो you so much for having me here. एक्चुअली व्हेन आई ये आइडिया मुझे बेसिकली आया कहाँ से वो मैं बताना चाहती हूँ। मेरे सोसाइटी के ग्रुप में एक थीम वाइज डे के थीम्स रहते हैं, येलो डे, ऑरेंज डे, दिस थीम वाइज वो मैसेज आया था। देन जस्ट सडनली पॉपअप हुआ कि क्यों ना ऐसे ये नवरात्रि हम माँ दुर्गा के 7 फॉर्म्स को सेलिब्रेट करते हैं, तो क्यों ना ऐसे सिग्निफिकेंस जिन ऑलरेडी जिन गॉडेस रियल टाइम गॉडेसेस में है उनको क्यों ना सेलिब्रेट किया जाए। तो वहां से हमने ये आइडिया पिकअप किया एंड वी आर रीचिंग आउट टू द रियल टाइम गॉडेसेस जो खुद का लाइफ बेटर करे एंड खुद के साथ औरों का भी लाइफ बेटर करे। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। Thank you. Thank you so much, Priyanka. Yeah. So Didi, we would like to know about your journey as a parenting coach. Yes, so for me, actually, it all started when I became a mother. I never really decided that I want to be a coach because I was into fashion business and that was my main business. And life was good, everything was good. And then I became a mother, and I was very happy when motherhood happened. But it was very challenging for me at the same time because I was a little like a controlling mother, like in terms of, I wanted to do everything right. Like I wanted to be on top of things. I wanted to be the perfect wife, perfect mother, perfect daughter in law. And I put a lot of pressure on myself. And because of that, I really struggled a lot. Like I remember there were days when I used to sit and cry. Sometimes I used to get very angry. Sometimes I used to start shouting, fighting with my husband. And sometimes I felt this whole range of emotions at the same time. And it was definitely not a very good phase. But the only good thing that happened for me during that time was that I realized that nothing in my life is going to change till I start to change. And nothing better can happen till I start to do the better thing. So I started reaching out to mentors to learn about parenting. And back then, almost 8 years back, there was very little awareness about parenting in India. कोई बात नहीं कर रहा था parenting के बारे Correct. में और कोई सोचता नहीं था कि parenting हम पढ़ भी सकते हैं. So when I told my husband also, who's very loving, very supportive, very forward looking, कि मुझे parenting सीखना है, I still remember he made fun of me. He was like, parenting कौन सीखता है? And who wants to learn about parenting? But yeah, I was able to sort of convince him, and not like convince him, I was very sure that I want to do this. So I went ahead and I started learning about parenting, and just in a few weeks I was able to see a massive shift in my experience. It was the same me, same child, same house, same in-law, same husband, everything was the same, sab kuch same tha, but my experience was very different. I was feeling very calm. I was not feeling the need to be correct all the time. I was not feeling the need to be appreciated all the time. So I was feeling very good inside. And when I saw that shift, one day, when I was doing my prayer meditation in the morning, जो हम पूजा करते हैं, मेरे अंदर ये thought आया that, I want to help other mothers and I want to transfer this feeling to them. And this thought, like
solidified, or it became even more strong for me when I had gone for one of my Buddhism meetings. And in Buddhism, we have these study meets. So the topic for one of our study meets was the importance of sharing your experience with others. Okay. And throughout that meeting, I was not able to concentrate. I just kept thinking about that, I have experienced such a massive shift, and I'm being able to do so much better for myself, for my child, and also, I've become much better with my family. I had this feeling that, I just want to transfer this feeling to other mothers. And, when I say super mom in my mission statement, because I feel every mother is a super mom, because all of us are Hmm. trying to do the best for our children. हमें सब बोलते हैं कि एक माँ है वो तो सुपर मॉम है, माँ के जैसा कोई नहीं, माँ के जैसा कोई नहीं बन सकता। लेकिन एक माँ ही जानती है कि उसके अंदर क्या चल रहा है, व्हाट शी इज फीलिंग। वो फीलिंग को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। बोलना बहुत आसान है कि True. आप एक सुपर मॉम हैं, पर हमारे अंदर वो सुपर मॉम जैसी फीलिंग भी आनी चाहिए। वी शुड फील काम, वी शुड फील कॉन्फिडेंट, वी शुड फील रिलैक्स्ड, वी शुड फील creative, we should feel courageous, and that's what all these Hmm. 9 forms of Durga signify, right? So Correct. that's how it started. And at that time, I didn't know how to sort of send my message across, how to reach out Hmm. to others. So I thought Instagram would be the best place to do so. In fact, it was my husband's idea that why don't you do it on Instagram, because that's where mothers are mostly hanging out. So I Hmm. was like, okay, but it was very difficult for me because I'm a very shy, introverted person, and I had never imagined putting myself, out there and going public on Instagram, sharing, stories from my personal space on Instagram. So obviously, it was not easy, but at that point, my willingness to sort of turn my mess into a message was very strong. So I did it, and I Hmm. think जब आप बहुत करना चाहते हो कुछ, then God also gives you that power, gives you that strength to do things which are very unnatural to you. Like, now Correct. when I look back, I still sometimes feel that I don't know how I did what I did. But I think जब आप करना चाहते हो, like the universe will support you, God will support you, they will give you the courage to do what you're meant to do. So I think that's what it happened with me. And yes, one thing led to the other. Instagram, I got a lot of support from mothers. They shared their stories. And then there has been no looking back. I got certified, and then now I have a very beautiful digital school for mothers, a beautiful community, in fact, called Easy Parenting Hub, where I'm personally handholding more than 3,000 mothers now. So Wow. it's a very beautiful feeling. And I think for me, it was designed by the mothers. So, I always say Easy Parenting Hub is a company for the mothers, designed by the mothers, because they kept Hmm. asking for something. I kept saying yes to it, and it's become what it has become. So yes, I'm just a coach by chance, but I absolutely love what I do. Amazing journey. Actually, you are the perfect example of that quote. Your mess will become your message. Just keep Yeah. exploring. You are the perfect example of that. कि प्रीवियसली कुछ भी आइडिया नहीं था, बट सिर्फ स्टेप बाय स्टेप खुद के लिए पहले वो सारी चीजें एक्सप्लोर करते गए एंड जस्ट शेयरिंग दैट जर्नी, दैट रियल टाइम एक्सपीरियंसेस विथ अदर्स एंड Yeah. मेकिंग अदर्स लाइफ बेटर। अमेजिंग। तो इससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये पूछना चाहती हूँ कि कैन यू शेयर हाउ योर एक्सपीरियंसेस एज अ पेरेंट हैव इन्फ्लुएंस योर अप्रोच टू योर कोचिंग एंड सपोर्टिंग अदर पेरेंट्स योर ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस। Yes, so I feel that, of course, I became a coach because I became a parent, because of what I went through, which I already did share with you. But also, I feel that, when you are going through that journey yourself, you can really understand other parents a lot better. So I'm mostly working only with mothers right now, and they are also in the similar age bracket. So they have young kids. Some mothers, obviously, with teenagers also. But what I feel is that अगर आपका बच्चा रोता है और अगर आपको कोई सामने से आके मदर बोलती है कि मेरा बच्चा रो रहा है, you will tell her that what, it's normal. All kids cry, right? But you're not just giving her, trying to give her solution to everything. Sometimes the actual solution is acceptance, accepting the situation. You don't have to fix the solution, or fix the situation all the time to feel good about your situation. You need to accept the situation. So there are a lot of things in parenting that we have to accept. They don't really need any fixing. The only thing you need to do in order to feel better about that situation, कि हम उसे अपना लें,
कि अगर मैं हुँ, माँ बनी हूँ, मेरी लाइफ चेंज होगी। अगर मैं माँ बनी हूँ, हो सकता है कि मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बट कुछ समय के लिए शायद मुझे थोड़ा स्लो डाउन करना पड़े। ज़रूरी नहीं है हुँ, कि हमें रुकना है, बट हमें स्लो डाउन करना पड़े। तो जब हम ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि बच्चा रोएगा, बच्चे बेड पे कूदेंगे, बच्चे हर वक़्त हमारी बात नहीं मानेंगे। अगर आप बच्चे को कुछ खिलाना चाहती हैं, हो सकता है बच्चा वो चीज़ ना खाए, कुछ और खाना चाहे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इन्हें अगर हम एक्सेप्ट कर ले, पेरेंटिंग बिकम्स अ लॉट ईज़ियर। बट फॉर मी एज़ अ कोच, इट बिकम्स वेरी ईज़ी फॉर देम, for easy for me to tell them that, this is normal because I'm going through it. But if करेक्ट। I'm not going through it, if I'm telling them, if your child is being stubborn and I'm giving them a list of 10 things that do this, तब आपका बच्चा ठीक हो जाएगा. I just feel that all हुँ, kids are already very good. They're already trying हुँ, to do their best. They don't really need any fixing. We need to हुँ, change our underlying belief system कि हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम क्या करते हैं उनके साथ. तो अगर हम इस तरीके से करें तो पेरेंटिंग बहुत आसान होती है. सो आई फील दैट इफ यू आर अ पेरेंट, it becomes very easy for you to help other parents look at that situation closely हुँ, and allow them the space to accept it rather than giving them step by step, कि ये करिए वो करिए, because sometimes those things don't help and those things are not good for your child also. Like if a mother अगर मेरे को वो आके बोलती है कि मेरा बच्चा सोफे में कूद रहा है, मैं कैसे ठीक करूँ इसे? सो आई टेल हर इसमें ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर 4 साल का बच्चा सोफे पे नहीं कूदेगा, तो कौन कूदेगा? दिस इज़ देयर चाइल्डहुड दिस इज़ देयर चाइल्डहुड. कोई 15 या 20 साल के बच्चे तो नहीं कूदेंगे, राइट? 4 साल का बच्चा हुँ, कूदेगा. सो समटाइम्स मदर्स जस्ट नीड दिस वैलिडेशन कि चलो मेरा बच्चा करेक्ट। कूद रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है. हुँ, So, just tell them that I don't think that this is a problem. So हाँ, sometimes the solution to the problem is to tell them that this is not even a problem. हाँ, And हाँ, that you ओके, can only do effectively when you're a mother. You just cannot learn from some book and tell them that do, because book में आपको क्या करते हैं, बुक में थ्योरी में वो आपको बताएंगे कि करेक्ट। if your child is stubborn you do 1 2 3 4. If your child is not eating you do 1 2 3 4 5 things. If your child is करेक्ट। not talking you do these 5 things. Same But into the blogs, same into the YouTube videos as well. exactly, These but are the 6 steps. yeah, children are human beings. They are not robots. And they are Correct. complex beings. Every child is different. Every mother Hmm. is different. So, what your child is doing is not just dependent on your child's temperament, it also depends on what you are doing as a parent and the environment that you're providing your child with. So, I feel Hmm. personal experience as a mother is absolutely invaluable as far as, my role as a coach is concerned, because all the time I'm learning from my child. And now I'm Correct. also learning from so many other mothers when I work with them and their experiences, and all of that sort of allows me to help more effectively, or empower them more effectively, because the intention is not for them to get dependent on me, but the intention is to empower them so that koi bhi challenge aaye, they are able to deal with it on their own. करेक्ट, करेक्ट। एंड जो आपने बताया कि इजी पेरेंटिंग हम यहाँ पे आपने एक मदर्स की कम्युनिटी क्रिएट की है, तो उसमें ऐसा होता है कि बहुत सारे मदर्स का सेम प्रॉब्लम है एंड दे आर गेटिंग सॉल्यूशन फ्रॉम ईच अदर आल्सो, राइट? Yes. ऐसे काफी सिचुएशंस आते होंगे। यस, बहुत सिचुएशंस आते हैं. इनफैक्ट हर हफ्ते जब हम कॉल करते हैं अपनी वीकली कॉल, एक वीकली Q&A कॉल होता है, एक इंग्लिश में और एक बार हिंदी में. तो उसमें बहुत मदर्स जुड़ते हैं, 100, 200, 300 जितने भी, मतलब अलग-अलग हफ्ते में अलग-अलग. पर जब कोई मदर अपने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आप हमेशा चैट में देखोगे मदर्स विल पुट कि मैम इनके क्वेश्चन के थ्रू मेरे क्वेश्चंस भी आंसर हो गए. मेरा भी करेक्ट। सेम क्वेश्चन था. मैम मुझे भी यही हम्म। प्रॉब्लम था. सो honestly, the problems are similar. Sometimes the solution can differ depending on your environment and your हम्म। responsibilities that you have to, because for me as a coach, it's very easy to go and say कि आप अपने बच्चे को बिल्कुल screen मत दीजिए, which everybody is talking about, don't give any screen time. But I don't know what her personal professional commitments are. करेक्ट। There are very different stories. There is a mother, and now she's not a part of my community, but urban company. So she had come to do some service for me, and she has a child. Unka bacha
ढाई या 3 साल का है, वो सर्विस करने उन्हें जाना पड़ता है बाहर, वो अपने बच्चे को अकेले रूम में बंद करके जाती हैं और उनके पास एक ही सपोर्ट है, स्क्रीन। हुँ, क्योंकि अगर उनके पास जब 2 चैलेंजेज़ है कि बच्चे को कल खाना खिलाना है या बच्चे को छोड़ के जाना है, शी हैज़ टू पिक वन। सो इफ आई टेल हर कि स्क्रीन मत दीजिए अपने बच्चे को, आई एम हुँ, नॉट helping her, I'm making her life more challenging करेक्ट। हुँ, because for her, her priority is to first feed her child, हुँ, right? तो जो भी solution है, that will also depend on the situation that you're going through. So it's very हुँ, easy for us to go and say, don't give screen, don't do this, don't do that. But we have to be very mindful of, everybody is consuming what you're talking about. करेक्ट। So अगर कोई माँ घर पे बैठी है और वो स्क्रीन पे डिपेंडेंट है और वो आपका वीडियो देखती है जहाँ आप बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल स्क्रीन मत दीजिए, तो हुँ, उनके माइंड में आपके स्क्रीन से आपके बच्चे का ब्रेन खराब हो रहा है या कुछ भी आप ऐसा बोल दो जाके सोशल मीडिया पे, तो आप सोचो उसकी माँ के ऊपर क्या बीतेगी। नाउ शी इज़ करेक्ट। गोइंग टू वर्क, शी इज़ स्टिल हैविंग टू लीव हर चाइल्ड एंड नाउ शी इज़ हुँ, सो स्कैर्ड कि मेरे बच्चे का ब्रेन खराब हो रहा है। So हुँ, I just feel that, it's a very sensitive thing and we have to be very careful about what we talk about. The intention is to empower them, to make them feel better, to हुँ, educate them, but not to scare them, हुँ, राइट। right? एंड So मोस्ट ऑफ द थिंग इंटरनेट पे यही हो रहा है कि टू स्केयर देम मीन्स नॉट गिविंग द प्रॉपर सॉल्यूशन। ऊपर-ऊपर से चीज़ों को देखा जाता है और ऊपर-ऊपर से सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। बट दैट I सॉल्यूशन don't इज़ नॉट अप्लाइड फॉर एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। exactly, yes. And that's why I say that, social media is a place of sharing. I create a हुँ, lot of content myself on social media. But हुँ, social media is not a place of learning. क्योंकि लर्निंग के लिए आपको सही एनवायरनमेंट चाहिए। करेक्ट, लर्निंग के लिए आपको इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, लर्निंग के लिए यू नीड मेंटरशिप। करेक्ट। ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया में नहीं है। सोशल मीडिया इज़ लाइक फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन प्लस जो भी आप सोशल मीडिया में देखते हो दोज़ आर इनकम्प्लीट दैट्स हुँ, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। Raise an independent child, you'll get 2 tips. करेक्ट। Maybe those tips are not applicable to your child. Maybe you हुँ, needed a different idea because your child is different. So I feel कि there is no harm in consuming content on social media, बट हमें इस इम्प्रेशन में नहीं रहना चाहिए कि अगर मैं सोशल मीडिया में जाके सीख रही हूँ इस टॉपिक के बारे में, तो मैं पेरेंटिंग के बारे में पढ़ रही हूँ। नहीं, आप नहीं पढ़ रहे। अगर आप सच में पेरेंटिंग के बारे में या कोई भी टॉपिक, नॉट जस्ट पेरेंटिंग, बी इट एनी टॉपिक, अगर आप कोई भी टॉपिक को अच्छी तरह सीखना चाहते हैं, तो आपको सही एनवायरनमेंट में, सही मेंटर के साथ वो टॉपिक सीखना है। एंड स्पेशली हुँ, अ टॉपिक लाइक पेरेंटिंग आई फील बिकॉज़ यू आर डीलिंग विथ रियल चिल्ड्रन। दे आर नॉट हुँ। लाइक प्रोजेक्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट कि हम उनके ऊपर कुछ भी ट्राई करके देख लेते चलेगा कि नहीं। Correct. It's same about the relationship also. If someone is the relationship coach or relationship mentor and he or he she is helping to some person, उस केस में भी वही है। आपके एक सेंटेंस पे सामने वाले का पूरा जिंदगी डिपेंड है। सेम लाइक हियर मदर एंड डॉटर हो या सन हो, उनका रिलेशनशिप है, पेरेंटिंग भी। तो यस, उस पे पूरा उनका फ्यूचर डिपेंड है जो आप उनको दे रहे हो उस पे। राइट, इट्स ह्यूज। कभी सोचा नहीं था इस एंगल से भी कि ये भी यस, चीज हो सकती है। अमेजिंग। So, Riddhi, I would like to ask you कि what is the key to maintaining a successful online parenting business, coaching business, while ensuring you have quality time with your family and children? Because we see you travel a lot along with your family also and with your most of विदाउट, your family, yes, without family also. यस। So, what is that key? सी आई जस्ट फील कि बैलेंस के साथ ग्रो करना बहुत डिफिकल्ट है एंड आई फील दैट बैलेंस भी 2 टाइप का होता है। एक होता है इंटरनल बैलेंस, एक होता है एक्सटर्नल बैलेंस जो हमें दिखता है कि क्या मैं बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, क्या मैं काम को टाइम दे पा रही हूँ। दैट्स व्हाट यू कैन सी दैट यस्टरडे आई स्पेंट 2 आवर्स क्वालिटी टाइम विद माय हस्बैंड, टुडे आई डिड 3 आवर्स ऑफ माय कोचिंग वर्क, टुडे आई स्पेंट टाइम ऑन माय हेल्थ एंड ऑल ऑफ दैट। दोज आर थिंग्स दैट यू कैन सी। बट समटाइम्स द मिस्टेक दैट वी मेक इज कि हम एक्सटर्नल बैलेंस को अचीव करने के चक्कर में वी लूज ट्रैक ऑफ इंटरनल बैलेंस एंड Hmm. इंटरनल फ्रीक्वेंसी। सो आई फील कि it is important that whatever you're doing, you give it your 100%. That's my philosophy. So if I, let's say, I had gone for this training where I was acting as a crew member for one of my mentors. So I was away from my family for almost 4 days.
राइट? बट उस टाइम मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू सर्व माई मेंटर फॉर 3 to 4 days. So that time I'm not worrying about anything else. Because if I'm Hmm. worrying also, that worrying is not helping me. Correct. But if I'm doing this one thing properly, it's actually making me feel good about what I'm doing, the contribution that I'm making, or whatever it is. So you are feeling good inside. Hmm. But sometimes, just to make yourself feel ki I'm managing everything properly on the outside, inside you're not feeling good. Inside you're a Hmm. chaos. आपको ऐसा लग रहा है my life is very arranged. I'm a very balanced mother. But that is what you're seeing. You're not actually able to see that inside you're going through a lot of internal conflict with your own self. You're feeling disconnected, you're feeling disharmony, you're feeling anxiety, you're feeling ki I'm not able to do what I want to do. So sometimes, harmony is a better word. So sometimes you do what you need to, not sometimes, actually all the time, do what you need to do, and then you get back to your family. And when Hmm. you're with your family, you just be with them. Like for me, Hmm. like when I'm in Gurgaon, when I'm home, I make sure I don't do anything before 7:38. Like, of course, Hmm. I do my meditation, gratitude, affirmation, and all of that. But like my son, I'll go leave him to the bus stop every day. Why? Because वहाँ पे और भी बहुत पेरेंट्स आते हैं. शायद मैं नहीं Hmm. जाती, हो सकता है मैं नहीं जाती, लेकिन वहाँ और पेरेंट्स आते हैं और मैं देख रही हूँ कि मेरा बच्चा उनको देख रहा है. Correct. तो मुझे पता है कि वहाँ मेरी ज़्यादा ज़रूरत है उस टाइम, क्योंकि मेरे बच्चे के Hmm. अंदर ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि और सबके पेरेंट्स खड़े हैं, मेरी मदर नहीं खड़ी है. तो Hmm. उस सिचुएशन में मेरी ज़रूरत है, सो आई विल बी देयर फॉर माय चाइल्ड. इफ माय चाइल्ड इज हैविंग एन एनुअल फंक्शन, कॉन्सर्ट, पीटीएम, आई विल अरेंज एवरीथिंग एंड ट्राई टू बी देयर फॉर माय चाइल्ड, because those are pockets of time where my child is really expecting my presence. But there Correct. are pockets of time where he's not really expecting my presence. Or even if he's Hmm. expecting, there is a way for him to be engaged in different things. So in those Hmm. moments, I am okay with giving more time to my coaching. बट अगर आप ये Hmm. सोच रहे हैं कि आप हर दिन अपने बच्चे को भी 10 घंटा देंगे, हर दिन आप अपने कोचिंग को भी 10 घंटा देंगे, इट्स नॉट पॉसिबल. Because there are times in between when I'm recording new courses. And when I'm recording those courses, सबको घर पे पता है कि अब ये अलग ही zone पे है. Correct. So nobody is disturbing me, Hmm. right? Because now everybody understands that, and even your child understands that. That, my mother is Hmm. a good mother, she does so much. Sometimes she'll get into her zone. Hmm. I think it's all about, you training your child, your family by setting the right boundaries and being consistent in your own actions, with your own actions. Mostly हम लोगों को सिग्नल नहीं कर पाते हमें क्या चाहिए, क्योंकि वी आर ओनली नॉट कंसिस्टेंट. एक दिन हम बैठेंगे, हम कोचिंग का काम करेंगे 10 घंटे, फिर दूसरे दिन हम कुछ नहीं करेंगे, फिर हम Hmm. तीसरे दिन वापस 5 घंटे करेंगे, चौथे दिन कुछ नहीं करेंगे. तब उनको भी नहीं लग रहा कि हम सीरियस है. Correct. We have to get serious about our consistency for them to get serious about taking us seriously. बट Right. हम क्या True. करते हैं, सीरियस नहीं होते और फिर वी कीप ब्लेमिंग देम दैट दे डोंट सपोर्ट मी, दे डोंट अंडरस्टैंड मी, दे डोंट अप्रिशिएट मी. They will support you, understand you, appreciate you when you are signaling it very strongly to them that Correct. what, this matters to me. I'm not just doing Hmm. some time pass. This truly Hmm. matters. तो जब आप अपने एक्शंस के थ्रू वो सिग्नल करोगे उनको, they will come around. Maybe it will take some time, but they will eventually understand that Hmm. she's in this for good. And now Correct. as a family, we have to be together. We need to support each other. And that Correct. support Correct. only come to you when you are willing to support yourself alone in the beginning Hmm. for some time. Yes. बट अगर आप Yes. फर्स्ट डे से ही उनका सपोर्ट ढूंढ रहे हो, वो कभी नहीं मिलेगा. जो आपने बात कही है वो सेम थिंग मेरे साथ हुई है इनिशियली. बस ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपको खुद को पहले अपना हेल्प करना पड़ेगा. व्हेन यू आर Yes, रेडी टू हेल्प योर सेल्फ देन अदर पीपल स्टार्ट ऑब्जर्विंग दैट थिंग एंड उनको ये पता हो जाता है कि सी आवर मेंटर ऑलवेज सेज दैट योर इंटेंट ऑलवेज हैव टू बी क्लियर. आपका इंटेंशन जो है वो क्लियर होना चाहिए कि मैं ये कर रही हूँ, ये मेरा इंटेंशन है उसके पीछे. तब बाकी के लोग भी वो चीज सेंस कर पाते हैं एंड देन yes, ओनली दे विल ट्राई टू हेल्प यू. एंड exactly. डेफिनेटली वो समझ में आता है उनको कि यू आर डूइंग समथिंग राइट, यू आर ऑन राइट ट्रैक. जस्ट वी नीड टू सपोर्ट हर.
एंड सब Yes. कर लेते हैं। Yes. अमेजिंग। या सो इजी पैरेंटिंग हब के लिए आपने कुछ कोचिंग फनल लॉन्च किया है, मतलब आपका एक इजी पैरेंटिंग हब का कोई फनल आप बता सकते हो? Yes. So first I get them into a master class जहाँ मैं बहुत वैल्यू ऐड करती हूँ, उनको बताती हूँ कि क्यों ज़रूरी है पेरेंटिंग के बारे में पढ़ना। उसके हम्म। बाद जो मदर्स हैं जिन्हें लगता है कि हाँ, वो और सीखना चाहती है और कुछ करना चाहती है अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए, दे कंटिन्यू विथ मी एंड दे जॉइन माय मेंबरशिप वेयर आई गिव देम अ लाइफटाइम सपोर्ट of courses, community coaching, challenges, and after that, again, if they see that a lot of value, if they see a shift and they feel that they want to still learn more, then I give them an opportunity to upgrade. And if they हम्म। continue the journey with me, then I also certify them as parenting coaches. वाह, मतलब वो एज अ पेरेंट आपके फनल में एंटर करते हैं एंड देन पेरेंटिंग कोच इफ दे वांट्स टू गो एट हायर लेवल, वो पेरेंटिंग कोच, सर्टिफाइड पेरेंटिंग कोच बन के बाहर निकलते हैं। कर सकते हैं। यस, अमेजिंग। एंड बहुत मदर्स है, ये मैं मेंशन करना चाहूंगी, who are getting certified as coaches not because they want to become professional coaches. They're getting हम्म। certified just because they want to learn more for their family. And I think ये बहुत important है। हम कितने डिग्रीज लेते हैं, BCom, MBA, PhD, dentistry, and so many courses we do in our life. और शायद हम कुछ यूज करते हैं, कुछ नहीं भी यूज करते हैं, बट पेरेंटिंग की एक डिग्री अगर आपने ली है तो वो आपके काम आएगी ही आएगी, बिकॉज वंस अ मदर यू आर ऑलवेज अ मदर. एंड आई ट्रू। थिंक एवरी सिंगल मदर शुड लर्न एंड देन पेरेंट हर चाइल्ड. हो सकता है अब हम्म। नेचुरली आपकी लाइफ अच्छा चल रहा हो, मे बी योर रिलेशनशिप विद योर चाइल्ड इज गुड एंड एवरीथिंग, बट स्टिल व्हेन यू विल लर्न एंड डू इट, यू विल रियलाइज हाउ मच बेटर यू आर डूइंग. So करेक्ट। irrespective of where you are in your parenting journey, either it's good and smooth or it's not so good and smooth, rough, and all of that, learning I think should be mandatory for every mother. Like अभी थोड़े दिन पहले BBC हिंदी, उनके साथ मेरी हम्म। एक इंटरव्यू हो रही थी और उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आप पेरेंटिंग में एक रिफॉर्म ला पाते तो आप क्या लाते. और मैंने हम्म। उनको कहा कि अगर मेरे पास वो अथॉरिटी होता कुछ करने का, सो आई वुड मेक इट कंपल्सरी फॉर एवरी हॉस्पिटल वाह। to make mothers learn about parenting even before they become a mother. जैसे हम मेडिसिन लिख के देते हैं, वैसे डॉक्टर्स हम्म। को लिख के देना चाहिए कि आज आप पेरेंटिंग के बारे में ये पढ़िए. दे शुड बी एजुकेटेड इन एडवांस अबाउट व्हाट इज postpartum depression. More than 80% women don't हम्म। even know what postpartum depression is, कि उनके साथ ये हो सकता है after they become a mother. Mostly mothers don't even know that the minute they give birth to their child, they will start lactating. हम्म। They will start, lactating, and if the child is not taking, there is a possibility for the milk to freeze, which can lead to करेक्ट। very serious consequences for the mother. तो उनको एजुकेशन नहीं है, इसीलिए वो सब होता है उनके साथ. हम्म। And whatever low life condition I went through also was because I never knew that this is something that I should learn about so seriously till it actually happened to me. So हम्म। I think, yeah, learning about parenting at whatever stage you are, it should be compulsory. ये थॉट ही बहुत अच्छा है कि जहाँ से आप मीन्स व्हेन यू आर प्रेग्नेंट तब से आपको पेरेंटिंग का नॉलेज होना चाहिए। ये थॉट ही Yes. बहुत अच्छा है। यस, सच और में। ये भी मैं शेयर करती हूँ कि जब हम इंश्योरेंस कब खरीदते हैं, कोई भी इंश्योरेंस या कोई भी इन्वेस्टमेंट हम कब करते हैं, पहले करते हैं एक्सीडेंट के बाद. पहले करते हम। हम कभी ये नहीं करते कि एक्सीडेंट हो गया चलो अब जाके इंश्योरेंस खरीदते हैं. लेकिन हम्म। पेरेंटिंग में मोस्टली हम यही करते हैं, पहले प्रॉब्लम होगा फिर हम जाएंगे उसका सोल्यूशन ढूंढने. ट्रू। राइट, बट बाय दैट टाइम यू हैव ऑलरेडी डन अ लॉट ऑफ डैमेज. ऑलरेडी हम्म। आपने एक ट्रेनिंग दे दी अपने बच्चे को और खुद भी आप वैसे ट्रेन हो गई अपने बच्चे के साथ वैसा बिहेव करने के लिए. So the idea is to invest in your learning even before the problem arises. कि वो जब रिवेंज। प्रॉब्लम आए, या यू आर प्रिपेयर्ड, यू नो दैट दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग. अभी मेरा बच्चा इतना साल का है, ये होने वाला था मेरे साथ, मुझे ऑलरेडी पता है. हम्म। और मुझे सिर्फ यही नहीं पता है कि ये मेरे साथ होने वाला था, मुझे ये भी पता है कि अब मुझे करना क्या है, क्योंकि तब वो ट्रू। आपके लिए प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी. हम्म। So you're already prepared. So it's very important to learn and be prepared even before the problem gets into your life. अमेजिंग, अमेजिंग। सो इट्स मोर लाइक दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। Yeah, क्यों कुछ होने का वेट करें, उससे पहले ही हमारा पेरेंटिंग करने के बारे में रीड करना या फिर लर्न करना स्टार्ट करें। exactly. And अमेजिंग। there's so much responsibility on us also, I feel. Because, करेक्ट। when you're raising one child,
You're actually contributing to the quality of the nation. तो Hmm. आपका बच्चा is, human resource, which I feel is one of the most important resources for any economy. तो उसमें हमारा जो योगदान है एज मदर्स, दैट इज इररिप्लेसेबल, क्योंकि जो आप अपने Correct. बच्चे के साथ करेंगी वो बच्चा और लोगों के साथ करेगा आगे चल के। True. और वो आप जो भी आपका बच्चा बनेगा करेगा, इट विल ऑल बिकम अ पार्ट ऑफ दैट, टुगेदर collectively will define what we are doing as a nation. Hmm. It's not just about me, my child, you, your child. It's a much bigger picture. And when we Correct. start beyond our immediate families, when we start to look at the bigger picture, then we'll realize that हम कितना important role play करते हैं as mothers. Hmm. कितना important है इसे सही तरीके से करना. करेक्ट, इट्स ऑल अबाउट द अपकमिंग जनरेशंस, एक पूरा Yes, जनरेशन ही डिपेंड है उसके ऊपर। yes. What you do with one अमेजिंग। child decides everything that comes after that. Your child will do with करेक्ट। his child and their child and their child, and everything gets decided accordingly. करेक्ट, करेक्ट, अमेजिंग। सो हाउ डू यू एंश्योर दैट whoever parents come to your funnel aligns with your nurturing and supportive coaching approach and guiding potential client towards the success in their parenting journey? So honestly, I've never really tried to enjoy. I think the parents who come with me, they're already resonating with my energy, because in the masterclass, I make it Hmm. very clear that, these are my values: family, growth, and independence. And I'm here to Hmm. help you, support you. But I only want you to continue this journey with me if you are fully aligned and if you are coming with faith and surrender. Because if you're not coming with faith and surrender, then do not करेक्ट। continue, because I don't think I'm the best person to help you there. Because Hmm. without faith and surrender, even God cannot help us. करेक्ट। मैं तो कैसे ही किसी की हेल्प करूंगी, right? Hmm. So I'm very, very clear about that. And also, I feel when people spend some time with you, they understand whether they want to come to you. And once they come in, again, I'm just being myself. So Hmm. when you're being yourself, and my courses are also, very experiential. They are not just theory. I talk a lot about my personal experiences, about the challenges that I went through, and nowhere am Hmm. I highlighting myself as a super coach or anything. I'm always a mother when I'm talking to my students, and I tell them that, just because I'm a coach, you guys should not be under the impression that my child doesn't cry or my child doesn't say Hmm. naughty things. Every child will do that, and you want to allow that space to your child. Your child will cry, करेक्ट। your child will say no, your child will be stubborn. द आइडिया इज कि चैलेंजेस है, बट आप उस चैलेंजेस में क्या कर रहे हैं, वो होता है सीखना। सीखने का करेक्ट। मतलब ये नहीं कि अपने लाइफ से चैलेंजेस ही हटा दें। आप हटा ही नहीं सकते चैलेंजेस, जब तक हम जिंदा हैं हम चैलेंजेस रिमूव नहीं कर सकते। करेक्ट। एजुकेशन और लर्निंग is not to eliminate the challenges, it's basically to empower you or to make you understand what to do when a challenge shows up for you. So I tell them, Hmm. there are challenges in my life, but I know what to do when those challenges show up for me. And I'm going Hmm. to do exactly that. I'm not here to claim that I'm going to eliminate those challenges for you. Hmm. I can give you a guarantee: if you're learning with faith and surrender, you will be able to face those challenges with a lot of grace and dignity, with a lot of Hmm. calm and serenity. वही है, अगर आप And चैलेंज में भी काम रह सकते हो, दैट्स इट। और क्या चाहिए? करेक्ट। एंड स्पेशली यू आर टॉकिंग अबाउट द चैलेंजेस, मैं ये बिलीव करती हूँ पर्सनली कि चैलेंजेस यूनिवर्स उनको ही देता है जिनमें वो चैलेंजेस फेस करने की कैपेसिटी है। ही यस, और जो इज, या यस, यूनिवर्स इज टेस्टिंग यू ऑन ईच एंड एवरी स्टेप कि मैं ये चैलेंजेस थ्रो करके देखता हूँ। शी इज हैविंग दैट कैपेसिटी बट शी इज हैविंग टू विलिंगनेस टू accept that challenge राइट, and या आई फील, या टेस्टिंग, मोर देन टेस्टिंग, प्रिपेयरिंग यू, आई फील. So, there's this very nice book which I read a few years back called Seat of the Soul by Gary Zukav. okay. Very beautifully, and it's also in our Bhagavad Gita also. The soul, you come here to learn the lessons you could not learn. So the whole soul doesn't enter your body. Only a part of your soul enters your body. That part of Hmm. your soul enters your body which could not learn the lessons in your previous life, previous or all the lives before that. So now when you Hmm. come, the soul has to learn this lesson. Now the only way to learn a lesson is through a challenge. Hmm. God is not really testing you, God is actually helping you by throwing those challenges at you.
because Hmm. through those challenges, God is creating an opportunity for us to learn Hmm. those lessons which we could not learn. तो सपोजिंग अगर आप बहुत गुस्से वाली हैं, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, so God will Hmm. give you challenges which will make you angry. Now the Uh, challenge for you is to stay calm. If you are able to stay calm consistently, then God will stop showing you situations where you will feel like getting angry, because now you have learned your lesson. But if you don't learn the lesson, God will send, God or whatever universe, higher power, Allah, Christ, जो भी आप सोचे, will keep sending you those challenges, and the intensity of the challenge will also keep increasing. Why? Because hmm. you have to learn the lesson. So when you fail an exam, the next time when you appear for an exam, it seems more difficult. So just like that in life, when you don't learn from a challenge, the challenge comes back to you with a greater intensity. And it'll keep coming back till you learn the lesson. So challenges are actually beautiful opportunities, I feel, for us to learn, so that we don't have to come back to learn the same lesson. So if you're able to learn it in Hmm. this life, great. If you're not, the next life also you come back and you go through similar situations and similar challenges till you actually learn those lessons. It's so deep and so amazing. Amazing, amazing. So, how can parenting coaches draw inspiration from the nurturing nature of Skandamata to create a more caring and balanced coaching environment? Yes. So of course, coach, you cannot be a coach if you're not caring and if you're not compassionate. You really have to be sensitive about the person that you're speaking with. The idea I feel is not to give them solutions. I don't give any solutions, honestly, when I'm talking to mothers. I'm all the time, asking questions, telling them that, the answer is inside you. आपको सब पता है. Now you just need to accept the fact that you already know what you need to know. Hmm. And when you are asking yourself, you will get the right answer for you. Me Correct. giving an answer to you might not be the best answer for you. But when it Hmm. comes from you, first, it will be the right answer for you. Second, it will work for you. Hmm. Because now you're more willing to use that idea, right? So, of course, Hmm. that is super, super important. But having said that, just care is not enough if you want to be a successful coach. You need all. You need Shailputri, you need Brahmacharini, you need Chandraghanta, you need Kushmanda, Skandamata, Skandamata. you need Katyayini, you need Kalratri, you need Mahagaur, you need all of them. You need Correct. Siddhidatri. Why? Because Siddharth. just being caring as a coach is not enough. Sometimes, every mother is a coach, I feel. Correct. Because what are we doing? We are not here to remove the challenges from their life. You cannot remove all the challenges from your child's life. Just like that, a Hmm. coach is not there to remove the challenges. As a mother, we are here to help them navigate through those challenges. कि हाँ बेटा आपकी Hmm. लाइफ में जो है मैं हूँ आपके साथ. I'm here to Correct. support you. But as a mother, no matter how much I love my child, I cannot remove the challenges that he's meant to go through. So if Hmm. something happens to my child, I love my child. If my child goes, falls, and hurts his knee, of course, as a mother, I'm not happy about it. But there is no way I could have stopped that from happening. Correct. वैसे ही जो भी Hmm. challenges है हमारे बच्चे की लाइफ में वो होंगे हमें एक्सेप्ट करना है वी कैन बी देयर टू हेल्प देम नेविगेट सो Hmm. जस्ट लाइक दैट एज मदर वी आल्सो नीड टू बी स्ट्रांग Hmm. you need to have the willpower you need to have the capacity to hold yourself back you need Hmm. to have that calming energy you need to have that Durga energy. You need to get angry about something sometimes. You need to be powerful sometimes. You need to be like Chandi sometimes if need be to protect your child. So you True. need to play all those different avatars. So as a mother, just being Skandamata is not enough. Just being caring is not enough. You need to be emotionally Hmm. strong, mentally strong. You need to have that willpower to go through whatever challenges that are coming in your life, in your child's life. You need to be a Hmm. whatever spiritual, or maybe just believe in that there is something more powerful than you that is working Hmm. for you and not against you. So you need to Hmm. have all of these things to be a Hmm. coach as a mother and even to be a parenting coach, because as a Hmm. parenting coach you're working with mothers, so you need to show them that सिर्फ हर टाइम केयर करनी, क्योंकि अगर आप सिर्फ केयर कर रहे हो और कंट्रोल नहीं कर Correct. रहे हो
चीज के लिए, so you're doing Hmm. more harm than good to your child. Correct. That there's a style in parenting called permissive parenting. So if you're Hmm. being very caring as a mother कि मेरे बच्चे की लाइफ कंफर्टेबल रहे, मेरे बच्चे को कभी तकलीफ ना पहुंचे, मेरा बच्चा हमेशा अच्छे से रहे, लेकिन sometimes you have to control also, because if you're Hmm. not doing that, then you're not doing the right thing for your child. Hmm. Right. If your child is drinking and smoking and you know that, of course, eventually when they grow old, you might get okay with it. But in the Hmm. beginning, at least you want to tell them that, you know what, fine, this is your life, but this is how it's not going to help you. So the Hmm. minute you put that boundary, you're out of the best friend category and you're acting as a coach now. Correct. Correct. Hmm. You have So to be all the जो कुछ भी क्वालिटीज है आप में वो सब होने चाहिए. हाँ, तो नौ सिचुएशन के हिसाब देवियाँ, से you have to use all those things. वो 9 देवियाँ Hmm. आपके अंदर होनी चाहिए एज़ अ मदर। Hmm. एंड वो जब आपको जो चीज़ एक्टिवेट करना है, आप उसे उस तरीके से आप एक्टिवेट करें। बच्चा बीमार है, आप केयर एक्टिवेट करें। बच्चा कुछ Hmm. गड़बड़ कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप चंडी एक्टिवेट करें। सो यू नीड टू एक्टिवेट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन, बट यू जस्ट कैन नॉट डिपेंड ऑन स्कंदमाता टू बी अ कोच और Correct. टू बी अ मदर। Amazing, amazing. So, Riddhi, I would like to ask you, कि what is your vision related to this parenting coaching business? Yes. So my big vision honestly is to make information on parenting reach every single household of India. That's my Wow. big vision, that हर घर में एक माँ हो जो पेरेंटिंग के बारे में पढ़े और फिर अपने बच्चों को बड़ा करे। और अब धीरे-धीरे ये विज़न थोड़ा अचीव हो रहा है, बिकॉज़ नाउ आई एम डूइंग पेरेंटिंग इन हिंदी। तो अब Wow. छोटे-छोटे गाँव से भी मदर्स जुड़ रही हैं, एंड आई एम गेटिंग अ लिटिल ओवरवेल्म्ड, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग, लाइक mothers in घूंघट, like घूंघट are joining Zoom Hmm. sessions, and वो Hmm. अपने बच्चे के लिए सीख रही हैं गाँव से बैठ के। एंड yeah, and I'm really giving them a lot of interest and attention also, क्योंकि मैं उनको बोल रही हूँ आप अपने गाँव में सिखाइए और मदर्स Hmm. को उनको बताइए कि ये कितनी ज़रूरी ये चीज़ है उनके लिए। So Hmm. I think that is my big mission, that every single household should have a mother who learns and parents her child, because it can really, really change everything for our children, for our country, for our nation, for us Nation. as well as mothers. We should feel Correct. good about our journey. We should not always feel like, we are put under some pressure test to Hmm. perform or be the best or anything. We should enjoy Hmm. this journey, because, it's a lifelong journey. So we Correct. want to learn, enjoy, and do it the right way. Hmm. Amazing. So, all the best for your vision. Yeah. And yes, so I would like to ask you that what that message you want to share with the women coaches and trainers, specifically to the women coaches. So women coaches, I feel, first pick something that you truly want to do. Like, just don't pick it because it's the popular thing to do, or everybody is doing it, or there's a lot of money in this topic. I don't think that's the right way to do it, because the only way you can be consistent is when you have a very strong why. Because Hmm. there would be a lot of ups and downs in any business, not just in a coaching business. In any business, there's a lot of ups and downs, but the only way you're able to stick around is when you know why you're doing what you're doing. Because if you're not very Correct. strongly aligned with मैं ये क्यों कर रही हूँ, या क्यों जरूरी है ये मेरे लिए, तो शायद जब भी आप उस बॉटम लेवल पे आओगे, यू विल हैव अ टेंडेंसी टू क्विट, एंड यू विल हैव अ टेंडेंसी Hmm. टू जंप टू द नेक्स्ट थिंग. So you don't Hmm. want to invest 10 years of your life and then jump to the next thing, or 3 years, 4 years of your life and then jump to the next thing. Better is to Hmm. first sit down with yourself and have this conversation with yourself कि क्या मैं सच में ये करना चाहती हूँ? और अगर मैं ये सच में Hmm. करना चाहती हूँ, तो क्यों मैं ये करना चाहती हूँ? ये 2 क्वेश्चन पूछने बहुत ज़रूरी है. एंड आई हैड आस्क्ड Hmm. मायसेल्फ दिस क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स, दैट क्या मैं सच में ये Hmm. करना चाहती हूँ, और करना चाहती हूँ, क्यों मैं करना चाहती हूँ? And there are days, Correct. when I'm very exhausted, where I'm very overwhelmed, and I sometimes get that thought that, क्या ज़रूरत है? And then I understand that, if I know in my heart that if I don't do this, I would be unhappy. Hmm. So,
And I come back, I keep coming back to this. So if you are seeing yourself going on coming back to what you're doing, and you know why you're doing what you're doing, that's very important. And once you get clarity about why you're doing what you're doing, then I think consistency is never a problem. क्योंकि अगर आपका करेक्ट। इंटेंशन है कुछ बड़ा करने का और आप सच में अंदर से वो करना चाहते हो, कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम नहीं हो. इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट, इट इज sort of signaling to you that you are not aligned with your why. तो अगर कोई भी कोच है जिन्हें लग रहा है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पा रही, then maybe you're not doing it for the right reason. करेक्ट। Because if फर्स्ट you वी are नीड। consistent, then you know why you're doing what you're doing. Then you don't need a morning alarm. You will get करेक्ट। up on your own. You don't need to set an alarm because you know why you're doing what you're doing. करेक्ट। एंड वन ऑफ माय फ्रेंड ऑलवेज यूज्ड टू से दैट मोटिवेशन इज फॉर द पुअर पीपल। वो हमेशा बोलता है ये चीज़ कि मोटिवेशन जो है वो आपके अंदर से होना चाहिए, जो इंस्पिरेशन है। आपको अगर व्हाई क्लियर है तो इंस्पिरेशन अपने आप आ जाएगा। यू Yes, आप बैठ के नहीं इंतज़ार करोगे कि कोई आके आपको मोटिवेट करेगा। exactly. Yes. And for करेक्ट me, एंड if I'm not doing this, then I feel very restless. जब आपको हुँ, कोई चीज़ इतनी अच्छी लगे, तो जब आप ट्रू। वो चीज़ नहीं करोगे, तब आपको अजीब लगेगा। करेक्ट। यस। एंड जो आपने अभी बताया कि यू हैव टू बी वेरी क्लियर विथ योर व्हाई, तो आपको ये सेम रीज़न लगता है कि मोस्ट ऑफ द कोचेस आर फेलिंग इनटू दिस इंडस्ट्री? यही सेम रीजन है कि बहुत सारे कोचेस हैं जिन्होंने अपना कोचिंग जर्नी स्टार्ट किया है, बट कुछ महीनों के बाद, कुछ साल के बाद वो नहीं आ पाते, मतलब वो कोचिंग जोन में। तो सेम यही रीजन है उसके पीछे भी, आपको क्या लगता है? No, it's not like maybe they truly want to serve it. This is not the only reason. Sometimes you need to wait. You know, waiting is the most difficult thing to do. ओके। And it is the most underrated thing also. बट हमें वेट करना हम्म। पड़ेगा. आप अगर चाह रहे हो कि आपको तुरंत से रिजल्ट मिल जाए आपकी मेहनत का, कुछ लोग हैं जिनको तुरंत से मिल जाता है, कुछ लोग हैं जिन्हें समय लगता है 3 साल, 4 साल, हो सकता है 5 साल, कुछ है जिन्हें 10 साल भी लगे। पर करेक्ट। अगर आप जानते हो कि आप क्यों कर रहे हो, तो शायद आप टिके रहोगे और अगर आप टिके हम्म। रहोगे तभी आप उसका रिजल्ट देख पाओगे। एक बहुत हम्म। सिंपल एग्जांपल है, सोचिए आप एक फार्मर हैं और आपने एक लैंड लिया, उस लैंड में आपने बीज बो दिए एंड अब आप वेट कर रही हैं कि क्रॉप उगेगा। आप 5 महीने उस लैंड पे वेट करती हैं और फिर आपको लगता है कि चलो ये लैंड ही खराब है। आप 5 मिनट वेट करती हैं और उसमें कुछ नहीं उगता। फिर आप बोलती है चलो हम्म। मैं दूसरे लैंड पे चलती हूँ। हम्म। अच्छी जगह देखूँगी फर्टाइल सॉइल एंड आई एम गोइंग टू सो माय सीड्स इन अ मोर रिच फर्टाइल रिच सॉइल। You go to this new piece of land and you start from zero. Again, you're putting the seeds and everything. While you're working on this land, that first land is now giving crops. हम्म। वो आप नहीं खा पा रही अब करेक्ट, जो कोई है और। वहां पे वो खा रहा है और आप इधर आ गई. हम्म। अब आप इसमें आपने मेहनत की, इसमें इसमें भी आपको 5-6 महीने बाद कुछ नहीं मिला, आप फिर दूसरे में चले गए. क्यों? क्योंकि अब आपकी आदत बन गई है एक चीज से हम्म। दूसरी चीज में जाने की. तो यू गो हम्म। ऑन स्किपिंग फ्रॉम वन थिंग टू द अदर. हम्म। ब्यूटीफुल सो द एग्जांपल। आइडिया इज इफ यू कीप सिटिंग ऑन दैट पीस ऑफ लैंड, हो सकता है हम्म। कि डिले हो गया हो जिस कारण करेक्ट। वेदर कंडीशन, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर एफर्ट, इट्स ऑल्सो नेचर प्लेइंग इट्स रोल. Just करेक्ट। like करेक्ट। that in life, it's not just about your effort, it's also God हम्म। waiting for you to get ready. Just हम्म। recently I did a speech where I shared that, don't just focus on receiving, focus on getting prepared. Because हम्म। when you are prepared, the receiving will happen on its own. एक हम्म। और एग्जाम्पल आपको देती हूँ, मैं ये स्टोरीज के थ्रू इसलिए शेयर कर रही हूँ, ये याद रहेगा. करेक्ट। आप करेक्ट। सोचिए, अगर आपका कोई बच्चा है 5 साल का और वो आपसे आपके आके आपसे फोन मांगता है, तो आप थोड़ा ना उन्हें फोन दे देंगी. शायद आपके हम्म। पास पैसे हैं, you have the resources, you have everything, but you will not give the phone to your child. Why? We don't give the phone because we feel it's not good for our children. करेक्ट। It's it's not the right thing to do. Just like that, हम्म। अगर आप बहुत मेहनत कर रही हैं और आपको उसका फल नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं that you don't deserve it. इसका मतलब है हम्म। God is waiting for you to get ready. Just like we हम्म। wait for our children to get ready, कि जब मेरा बच्चा करेक्ट। बड़ा होगा तब मैं उसे फ़ोन दूँगी, तब इस फ़ोन का उसे उतना नुकसान नहीं पहुँचेगा. क्योंकि अब मेरे बच्चे के अंदर उतनी बुद्धि है कि फ़ोन को कैसे यूज़ करना है. ठीक हम्म। उसी तरह हो सकता है अगर आपको फाइनेंशियल सक्सेस नहीं मिल रहा है अभी अपनी मेहनत का,
Maybe God feels that you are not ready to handle that kind of finances. Hmm. So maybe God True. is just waiting for you. या अगर समय से पहले आपको बहुत सक्सेस मिल जाए, तो शायद आप रेडी नहीं है उसको हैंडल करने के लिए। Hmm. गॉड आपको बीच में थोड़ा और रेडी करेंगे। Hmm. आपको कुछ और डिफिकल्ट टाइम दिखाए या कुछ दिखाए जिससे आप रेडी हो जाए, ताकि आपके अंदर Hmm. वो मोमेंट ना आए जब आपको वो सक्सेस मिले। Hmm. Hmm. God is preparing you. So just I feel just keep doing what you can do because you cannot really decide what's going to come to you. तो Hmm. मेहनत करते जाओ सही इरादे के साथ और जो होगा वो होगा। अमेजिंग, दोनों भी एग्जांपल्स बहुत सही थे। जैसे कि आपने सेकंड एग्जांपल में बताया कि गॉड इज प्रिपेयरिंग, वो आपको प्रिपेयर कर रहा है उस सिचुएशन के लिए। बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं, अर्ली एज में बहुत सारा सक्सेस मिल जाता है बट वो सक्सेस को हैंडल नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। वो भी अलग प्रॉब्लम। पोस्ट यस। सक्सेस जो डिप्रेशन आता है वो अलग प्रॉब्लम है। यस। So I think yeah, when it's a slow journey and it's I think you are ready to handle it because you've seen everything. करेक्ट। So it's better. Like for me also ये like एक दो दिन नहीं 7 साल से मैं पेरेंट्स के साथ काम कर रही हूँ। So people think that जिस जिस जो भी आप सक्सेसफुल लोग को लो आप उनसे बैठ के उनके पिछले स्टोरीज के बारे में बात करो. It's not so राइट। easy. Very recently करेक्ट। I was watching this documentary on Beckham. And it was so his life was so difficult. We see the glamour and we see all of that जो हमें दिखता है बाहर मीडिया में और ये वो, but जो उनके challenges थे, how difficult it was for him to get to where he got to. Lot of compromises, sacrifices, lot of torture, difficult days, and all of that he went through to become what he became. वो इस तरीके से ही है कि लोगों को ओवरनाइट सक्सेस दिखता है बट वो ओवरनाइट सक्सेस के पीछे जितने स्लीपलेस नाइट्स है वो देखना Yeah, नहीं चाहते हैं। इट्स लाइक दैट exactly. ओनली। अमेजिंग। सो रिद्धि, आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट इज व्हाट इज वन सेंटेंस मैसेज यू वांट टू शेयर विद ऑल द women और mothers? Yeah, so I just feel, and this would be for everybody, I think, work on yourself. Work on yourself and work on your personal growth. And I think if you're living, breathing, eating, sleeping, repeating, doing whatever it is, चाहे आप homemaker हो, working mother हो, working woman हो, या जो भी हो, student हो, जो भी हो, you have to invest in yourself. You have to invest in your growth because it's very easy to blame people, very easy to complain, very easy to say कि इसके वजह से ये नहीं हो रहा, उसके वजह से ये नहीं हो रहा. लेकिन जब तक आप उन पे फोकस करोगे, आपकी लाइफ में सब सच में कुछ नहीं होगा. करेक्ट। अगर आपको खुद अपनी लाइफ में कुछ करना है और आगे बढ़ना है, focus on yourself. And for mothers also, the more we focus on ourselves, the lesser we need to focus on our children. करेक्ट। बिकॉज़ आप जितना खुद पे काम करोगे, ऑटोमैटिकली आपका बच्चा उसमें से 80-90% पिक कर लेगा. जो 5-10% चीज़ें वो खुद के टेम्परामेंट से कर रहा है, वो हमें उसे अलाउ भी करना है. बिकॉज़ वी डोंट वांट आवर चिल्ड्रन टू बी जस्ट लाइक अस. They have their राइट। own life journey. So I think just focus on yourself and take responsibility for every single thing that you want from yourself or for yourself. तो आपको जो भी चीज़ चाहिए उसके लिए आप खुद पे ही डिपेंड करिए. You can करेक्ट। take help, but be responsible and focus on your अमेजिंग। personal growth. Yes. Yes, yes, amazing, amazing. Thank you so much, Riddhi, for coming to this particular episode and sharing so many insights with us related to the parenting and related to your journey also. And एक guidance देने के लिए इतने अच्छे story format से हमें नए concept को introduce करने के लिए thank you so much for that. Yes, thank you so much प्रियंका for these wonderful questions. बहुत अच्छा लगा. And जब हम TTT में मिले थे, I think it was so nice to know you and to get to know you as a person. And now we are meeting very often in different trainings. Yes, So it's yes, yes, always nice to connect with you, Priyanka. yes, Thank yes. you. Thank you. Yeah. Thank you so much. Thank you.